आईलैशेस लगा गई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेकअप हमारा डन हो चुका है। ये गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर न्यू मेकअप वीडियो। या गाइस, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग। करने वाली हूँ, आई डोंट नो कैसा होने वाला है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। बट या गाइस, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी अपना। देख सकते हो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये, तो मेरा मन है कि मैं भी ऐसा लुक क्रिएट करूँ विच इज़ इंस्पायर्ड बाय जनरल जुबैर। एंड आप सबको कैसा लगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गो। मॉइस्चराइजर, बट हमें इसको पूरी आइज के ऊपर नहीं लगाना है। अब मैंने लिया ये स्विस ब्यूटी की पैलेट, जिसमें एग्जैक्ट मेरे पास गोल्डन कलर्स है जो मैं भी आइज के ऊपर फिल करूँगी विद द फिंगर्स। नाउ वी यूज काजल फॉर आईलाइनर। This is also from Swiss Beauty. Do the same steps on these eyes. Oh my god, it looks so fantastic, yeah.
गाइज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मेकअप कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना हैवी मेकअप किया है, वो भी इंस्पायर्ड बाय जनरल जुबैर। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया है। कैसी वीडियोस देखना आपको पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, अगर आपको और भी रिएक्शंस और भी क्रिएटिंग मेकअप्स चाहिए इंस्पायर्ड बाय अनदर्स, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन मुझे मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, स्टूडेंट्स, टेक केयर। सो गाइस पूरा मेकअप मैंने कर लिया, लेकिन आई लैशेस वेयर करना मैं भूल ही गई थी। तो वीडियोस भी बना दी थी मैंने, सब कुछ पिक्स भी ले ली थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने आई लैशेस लगाई नहीं, तो मैं अभी आई लैशेस लगा के आई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेकअप हमारा डन हो चुका है। तो मुझे कमेंट में बताने की कैसा लग रहा है ये मेकअप। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँ।